A fire broke out at Burma Kim United North Block A around 5 am on Saturday. Around 20 families have been affected by the fire. The NSCN GPRN has responded to a clarification issued by Dimapur Police, calling it fabricated and false. The statement details an incident on 22nd March 2025 where NSCN members intercepted a vehicle transporting contraband sunflowers from Manipur to Assam based on information from the vehicle's driver. Venuzo Dauho, 28, from the Tenyezu village made history by winning the 15th NWA Open Naga Wrestling Champion for the third consecutive year, earning ₹2 lakh. In a major anti-Maoist operation in Chhattisgarh's Sukma district on Saturday, at least 16 Naxalites were killed and 2 security personnel sustained injuries. India on Saturday sent around 15 tons of relief materials to the earthquake-hit people of Myanmar, the earthquake which struck Myanmar and neighboring Thailand on Friday. Hello and welcome to Nltv English Primetime. This is Janjan Kasar, and now let's look into news in detail. A fire broke out at Burma Kim United North Block around 5 am on Saturday. Around 20 families have been affected by the fire. Speaking to the media, chairman of Burma Kim United North Block A, Koshi Rao, said that the cause of the fire is due to a short circuit. Fire tenders from fire station central dose of the blaze. Notably, no casualties were reported. फैमिली तो मुखान ला तो इतो लास्ट कॉर्नर रूम ना इतोला नेक्स्ट रूम ते মই ঘুমাই থাইছিলে তো উপৰতে পুৰা হিট আয়া আছে মুখান সব বিছনাতে ঘুমাই কিনা থাইছিলে তো ঘুমাই না থাকা তো উপৰতে সিলিং তে তো জুই লাগি কিনা হিট আয়া আছে তো বেৰা জ্বলালা তো আৱাজ পাই আছে তো ইটো পৰা পিছতে মুখান কিৰা গৰম এনিকা আয়া আছে না কইনা চাইছে তো জুই পুৰা একদম লাগি না আছে মই জেনে তেনে চাপল সব ছাৰি কিনা বাচ্চাকে লৈ কিনা বিছনা পৰা পলা লাগা আছে ইটো পুৰা জুই তো আৰু একদম ডাঙৰ হৈছে একো ওলাবলৈ পাৰা নাই আমিখান যেনে জানে বাঁচাই কিনা ওলাইছে বাচ্চা খান গলৈ কিনা এইটো আছে তো শুনিব পাৰিছে কি আপুনি মাইনৰ ইনজুৰি লাগিছে না কি কৰা কিনিকা লাগিছে এইটো তো আমি মানুহ তো ঘৰতে থাকিছে সব अचानक পুৰা আগ লাগিছে না এইটো পুৰা ঘৰ পুৰা আমি বাঁচাই কিনা উলা থাকা টাইম দে এইটো জ্বলি যাইছে এইটো তো অলপ এইটো তো আপনি লা ঘৰে বি সামান গন্ত পুৰা হয় আমি লা ঘৰতে বি জ্বলি যাইছে সামান তো পইচা বি জ্বলিছে 3000 তো আচ্ছা তো ইটো ঘৰ কুদিবা জুই লাইছে তো ঘৰ মালিক থাকিছে না ইটো ঘৰ মালিক আছে হয় তো খালি रूम तो खाली थाइছিলে এইটো পৰা কিনিয়া খুনা জ্বলিছে কি পৰা জ্বলিছে এইটো মহান বি নাজানে আৰু ডকুমেন্টস খান একটা চাপল তক বি লাগাব পাৰা নাই ডকুমেন্টস আৰু পইচা সব জ্বলিছে জুৱেলাৰি খান এইটো খান সব একো পা নাই আচ্ছা আপনি কাদু জুই কুদে ওলাইছে তো রুম তো খালি থাকিছে এইটো রুম খালি রুম পৰা লাগি কিনা ওলাইছে আৰু পুৰা সেলিং খান দে ধৰি লৈছে তো এইটো হিট আই থাইছিলে জুই লাগা তো চাইছে কিলা হিট আই আছে কইনা তো সাথে জুই একদম জুলি আছে ঠিক পুৰা যেনে তেনে বাচ্চাকে লৈ কিনা পাত বিছনা পৰা পলা লাগা আছে দরজা খুলি কিনা আমি খান এইটো আছে তো ফ্যামিলি কিমান এফেক্ট হইনে থাকিব আৰু গ্যাস সিলিন্ডাৰটো ফুটিছে গ্যাস সিলিন্ডাৰটো ফুটিয়া নাই আৰু আমি খান ঘৰ পৰা ওলাবলৈ পাৰা তো খালি গ্যাস সিলিন্ডাৰে পাৰিছে আৰু একো ওলাব পাৰা নাই দসৰাটো একো ওলাব পাৰা নাই গাওতে কি কাপোৰ লগাই কিনা আছে এইটো আছে এতিয়া আচ্ছা আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেড খান টাইম দি পঞ্জিছে না নাই টাইম তো পুঞ্জিছে টাইম তো তাখান বি পুঞ্জা কাৰণে এইটো খান নহলে এইটো খান তো সব যাবলৈ থাইছিলে এইটো মানে ফায়াৰ ব্ৰিগেড খান বি টাইম তে আই কিনা তাখান বি বেছি মদত কৰিছে থ্যাংক ইউ হনবিল টিভি আৰু এনএলটিভি আজি ফুজুৰ 5 বাজি নিচনাতে জুইটো ওলাই কিনে আমি কান ফায়াৰ ব্ৰিগেডে আৰু ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেন্সি তে ইনফৰমেশ্যন দিছিলে টাইমলি তাকান আহাৰ কাৰণে জ্বলাটো জ্বলিছে হলি বেছি তো নাজ্বলি কিনে আমি বাচিব পাৰিছে আমি কান লা কলোনি আচ্ছা ফাৰ্স্টলি আমি কান জ্বলাতলিতো ইউনাইটেড নৰ্থ ব্লক এ বাৰ্মা কেম্পতে জ্বলি কিনে আছে ৱাৰ্ড 3 তে আছে আৰু দুইটা কম্পাউণ্ড জ্বলিছে ঘৰ মালিক দুইটা আছে হলিবি ৰুমছ কান্তলিতো এৰাউণ্ড
20 to 22 enika juli kine ase aro families tole to 20 families nisna hobni ki enika juli si na cause of fire tole to short circuit pra hola ase ঘর মালিক তলে তো একটা রুম তলে তো গ্যাস রুম বানাই নে থাকিছে তাতে কোন বি থাকা নাই আর ফায়ার তলে তো তাতে প্রায় শর্ট সার্কিট হৈ কিনে জ্বলা লাগা আছে আচ্ছা ঘর জ্বলা তান্তে তলে তো কোনবা কান তলে তো ভলান্টারিলি তাকান মদত কৰি নে কৰাতে একজন কিতো তালা সোলজাৰতে অলপ বাৰ্ন হৈ যাইছে আৰু ইতুলা ওচৰতে ঘৰ জ্বলালা ওচৰতে একটা ডাম্পাৰ বি থাকিছে হয় মেজৰটো হোৱা নাই হলি বি সাইতে এটো বি অলপ ডেমেজ হৈ কিনে থাকিছে নাই এটো বেৰা গৰ হোৱা পৰা বেৰা গৰ কাঁচা গৰ হোৱা পৰা সামান তো একো উলাও পৰা নাই কিলে মানে মানুহে বাচিব লাগে পলা এটো কাৰণে সামান তলি তো একো উলাও পৰা নাই আৰু আমি এস্টিমেট কৰি আছে 5 লাখ নিছনা তলি তো লস হৈছে নেকি কই নাই ফায়ার ব্রিগেড কান তলি তো এক্স্যাক্টলি তলি তো আমি কান বি টাইম নাজনে হলি বি আমি কান এজিউম কৰা তাক তলি তো 5:30 নিছনা তো পুংচি যাইছ নেকি আৰু তাই কান বাৰ কৈ আছে হলি বি তাকান টাইমলি পুংচা কাৰণে আৰু তাকান লা ওয়ার্কম্যানশিপ তলি তো আমি কান বেছি এপ্রিশিয়েট কৰি আছে এনেকা দুসরা জায়গাতে হলি বি আনফরচুনেট ইনসিডেন্ট জলি থাকিছে কলি তো The NSCN GPRN has responded to a clarification issued by Dimapur Police calling it fabricated and false. The statement details an incident on 22nd March where NSCN member intercepted a vehicle transporting contraband sunflower from Manipur to Assam based on information from the vehicle's driver. The NSCN recovered the consignment and later 4 members were arrested by police on 25th March along with the driver and drug smugglers. The police promised the release of the NSCN member in exchange for handing over the contraband, which was collected by the police officer on 26 March. However, the arrested members were not released as promised. NSCN GPRN claimed that despite their cooperation, the Dimapur police continued to issue false statements and they are being threatened to disown the fact. They criticized the police for fabricating evidence and called for genuine proof to be presented. The group also commented the police section claiming the public is not deceived by this false narrative and urged an independent investigation by the Ceasefire Supervisory Board. Venezuela Daho 28 from Nltv village made history by winning the 5th NWA Open Wrestling Championship for a 3rd consecutive year, earning rupees 2 lakh in the men's under 90 kg category. Sesuye Ngeka from Sutozu Newi village won 1 lakh. Meye Sili video from Runguzu village claimed victory in the men's under 75 kg category with rupees 1 lakh. In the women's above 60 kg category, Kekriluno Tevu from Seyama village took home rupees 50,000 while Vizoseno Kiso from Sakrabama village won rupees 50,000 in under 60 kg category. The event was witnessed by over 5,000 spectators with Minister Jacob Zimomi attending the inauguration and N. Toshi Chang gracing the closing ceremony. I want to begin by acknowledging the hard work
and dedication of every wrestler here today. It takes years of training, sacrifices, and unyielding determination to compete at this level. Your commitment to your craft is inspiring, and you serve as a beacon of discipline and hard work to those who look up to you. In Nagaland, we are fortunate to witness the pride and enthusiasm surrounding Naga wrestling. Among the many sports and games that are held throughout the years, Naga wrestling stands out as a favorite, attracting the largest crowd and being one of the most celebrated events. This deep-rooted passion for the sport speaks volumes about its significance within our community. The Nagaland Wrestling Association has been working tirelessly to bring all the Naga tribes together, urging us as a community not only acknowledging but also actively participate in Naga wrestling. Naga wrestling is an integral part of our identity, born within our very own Naga community. Mizoram Chief Minister Laldoma announced that 517 individuals termed Progress Partners will receive financial aid under State's Bank Kaya scheme first phase. Each beneficiaries will get rupees 1 lakh in support aimed at farmers, entrepreneurs and individuals to promote sustainable livelihood. Launched in September 2024, the scheme also provides project loans up to rupees 15 lakh with the state's government acting as a guarantor for better credit access. Beneficiaries paying loans on time are eligible for up to 100% interest subvention. The Mizoram government has allocated rupees 350 crore for the rupees 2025 to 26 fiscal year to implement the scheme. Mexico, Arunachal Pradesh was named the best mountain destination at the India Today Travel Award on March 28. The award was presented by Union Minister Gajendra Singh at a ceremony in New Delhi. Arunachal Pradesh tourism officials Adong Moyong and Marto Bagra accepted the honor on behalf of the state. Mexico, known for its stunning landscape and emerging tourism potential, was recognized for its unique charm. The event, attended by key tourism industry leaders, and highlighted the importance of sustainable development and collaboration for future growth in India's tourism sector. In Manipur's Hill and Valley district on March 28, security forces conducted area domination exercises leading to significant recoveries of arms, ammunition and explosives. During an operation in Bishnupur district, security personnel confiscated a substantial cache of weaponry including firearms, ammunition, explosive and grenade, security gear and communication devices. Similarly, in another operation, forces recovered firearms and ammunition, explosive and grenade, various tear smoke shells,
a TPT-TS handset and bulletproof vest cover, a hunting boot pair and a flashlight. Additionally, in Imphal East District, forces recovered explosive and IEDs, weapons sight and accessories, live round ammunition belt, 3 trip flare mechanism and 20 meters of Cortex wire. This operation reflects the ongoing effort of security forces to curb illegal arms and militant activities in the region. Authorities have intensified surveillance and continues to conduct search operations to ensure peace and stability. On 28 March, BSF troops under Sector CI Operation Manipur and Sea Frontier in joint operation with Manipur Police and Army seized significant cache of arms, ammunition, explosive in Kangpopi and Kakchung district as part of the campaign against illegal arms proliferation and to ensure regional security. Now we'll take a short break. Stay tuned. We'll be right back with more updates. Welcome back. Let's get back with the news. The Aizawl Zoological Park welcomed a female infant binturong. The species did serve as the official logo of the Mizoram State Zoo. The baby binturong was found alone in the jungle by villagers of Densur in Lunglei district. Officials believe the mother may have killed, leaving the infant vulnerable. The villagers immediately informed forest officials to rescue the baby and transported it to the city for specialized care. Given its young age and need for constant nurturing, authorities decided to house the binturong at the state zoo. The binturong, listed as vulnerable on the IUCN Red List, faces threat from habitat destruction and wildlife trafficking. In Agartala, Tripura, local residents have raised concern over the growing activities of drug dealers and call girls, accusing the Tripura police of not taking adequate action to curb these illegal activities. Young people, including tribal women and housewives, are illegally being trapped by drug traffickers and call girls in a network that threatens the future of the youth. Call girls are reportedly engaging in prostitution activities at various locations, including IGM Hospital, Chowmunhani and other areas, and even organizing prostitution parties in hotels. Locals have arrested call girls red-handed in these areas and are demanding stricter police action to stop these illegal activities in the city. India on Saturday sent around 15 tons of relief materials to the earthquake-hit people of Myanmar. The earthquake, which struck Myanmar and neighboring Thailand on Friday, caused widespread destruction, including collapsed buildings, bridges, and monasteries, with at least 144 people reported dead in Myanmar. The Indian Air Force dispatches the supplies via C-130J military transport aircraft to Yangon.
The relief materials including tent, sleeping bag, blankets, ready-to-eat meal, water purifiers, solar lamp, generator set, and essential medicines. Prime Minister Narendra Modi expressed concern over the disaster and reaffirmed India's commitment to providing all possible assistance to Myanmar and Thailand. In Mahendragiri, Tamil Nadu, ISRO successfully conducted the first hot test of the Power Head Test article at the ISRO Pollution Complex on Friday. This marked a key milestone in developing the semi-cryogenic engine for the LVM-3 launch vehicle. The engine, with 2,000 kN thrust, would boost payload capacity from 4 tons to 5 tons in GTO. Developed by the Liquid Pollution Systems Center, the engine uses non-toxic pollutants and features advanced subsystems like pre-burners and turbo pumps. The successful test validates engine performances, paving the way for future tests before full integration. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav on Saturday said that Prime Minister Narendra Modi wants to connect 1 lakh people into politics who don't have any political background. CM Yadav interacted with the people during the launch of I Am BJP Future Force Bootcamp, a multi-dimensional campaign at BJP headquarters in Bhopal. Yadav also accompanied by State BJP President V.D. Sharma and other party leaders. हमने जो पिछले समय मेंबरशिप के समय पे बड़ी संख्या में जो मेंबरशिप अपने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को जो दी गई थी, उसमें सिलेक्शन के बाद जो अध्यक्ष जी ने बताया, एक चयन करने के बाद सच्चे अर्थों में हमारे सभी प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए लोग राजनीति में भी रुचि ले, राजनीतिक सिस्टम को भी समझे और अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जनता के कल्याण के लिए वो उसमें भागीदार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो 1 लाख लोगों को राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ना चाहते हैं, जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन At Gurudwara Rakabganj Sahib, Minority Affairs Minister Kiren Rijiju launched the Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan scheme on Saturday, aimed at providing skill training and educational support to 31,600 individuals. Of this, 29,600 will receive skill training and 2,000 will be offered educational support. The program, which will be implemented by the Delhi Sikh Gurudwara Management Committee, focuses on empowering women and youth with a particular emphasis on emerging job roles such as AI data scientist, telecom technician and solar PV installer. Rijiju highlighted that the initiative will include stipends from participants and ensure seamless integration into the workforce with empowering opportunities. He stressed the importance of economic empowerment, particularly for the minority communities, and expressed the government commitment to fostering skill development. The scheme, which also involves the Delhi government and a partnership with DSGMC, aims to generate employment and equip youth with future-ready skills. हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास जो जिम्मेदारी है, 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग अलग काम करने का जिम्मेदारी हमारे मंत्रालय को दिया गया है। इसके तहत आज सिख कम्युनिटी के लिए एक विशेष कार्यक्रम का यहाँ लॉन्च हुआ है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हम बहुत बड़ा एक कार्यक्रम शुरू करने का आज MOU साइन किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी हमारे बीच में आए हैं एक विटनेस के तौर पर, क्योंकि दिल्ली सरकार इसमें बल देने में सहयोग दिल्ली सरकार से जरूरत पड़ेगा। और आज हमारे मिनिस्ट्री के जितने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिल करके हमने काम करने का आज से शुरू किया है। इसमें स्किलिंग के लिए जो बेसिक सिख कम्युनिटी में युवाओं के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं के लिए टारगेट करके हम काम कर रहे हैं। इसमें स्टाइपेंड का प्रावधान होगा और बाकी जो ये जो प्रोग्राम को चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए वो भी हम मदद करेंगे। अलग अलग यूनिट सेंटर बना के काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। शुरुआत में हम 31,000 युवाओं के लिए टारगेट रखा है, लेकिन इसको हम एक्सपांड करेंगे।
आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ भारत सरकार द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत 100 करोड़ रुपया स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारी माइनॉरिटी के जो सिख बच्चे हैं उनके लिए भारत की सरकार पैसा खर्च करेगी। इससे हर फील्ड के अंदर सिख बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराए जाएंगे। इससे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी होगी। इसके तहत वो जिस भी फील्ड में अपने बच्चों को गतके से लेके ऐसा कोई भी फील्ड जिसमें उनको कोई आर्ट्स सिखाना चाहते हैं उसके लिए अपना पैसा खर्च करके उन बच्चों को इस तरह से स्किल दें ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बन पाए। ये केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी 100 करोड़ रुपया है। मैं मानता हूँ कि इसके साथ दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी In Selana, Madhya Pradesh, an inquiry has been ordered after a pregnant woman in Selana town, Ratlam district, was illegally turned away twice from a health center. Her newborn died after she was rushed to the facility on a hand cart by her husband in the early hours on March 24. A viral video showed the man desperately trying to get his wife to the hospital for a third time. Following the incident, the district collector Rajesh Batam ordered an investigation which found negligence. As a result, Salem's block medical officer Dr. P.C. Kohli was issued a show cause notice, while nursing officer Chetna was suspended and NHM contract nurse Gayatri Paditar was terminated. स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर चेतना चारिल और गायत्री पाटेदार दोनों को निलंबित किया गया है। संबंधित ड्यूटी डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयुक्त स्वास्थ्य को प्रस्ताव भेजा गया है और जो संबंधित बीएमओ है उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और पूरी जांच होने तक उनको बीएमओ के प्रभार से मुक्त करते हुए कार्यालय में अटैच किया। मेरी मिसेस को चेकअप कराने के लिए ले गया था हॉस्पिटल। वहाँ पर मैडम ने चेक किया, मैंने ऐसी समस्या है सिस्टर को, मेरी वाइफ को, अब इसको एडमिट कर लीजिए। सिस्टर ने चेक किया, जब मेरे बच्चे के पेट में धड़कन थी, वहाँ से एडमिट नहीं किया, वहाँ से धकेल दिया, घर पे लिया। फिर शाम को रात में 24 तारीख की रात में 1 बजे फिर ले गए। मिसेस को दर्द होने लगा। वहाँ पर मैडम को पूरी जांच बताई सुबह की, मैडम जैसी सुबह घटना हुई थी। वहाँ पर चेक किया उन्होंने, चेक करने के बाद मैंने ऐसी समस्या सुबह भी बताई थी, अब एडमिट कर लीजिए। वहाँ पर भी सिस्टर ने ये बोला कि दोपहर तक का होगा, दोपहर तक का होगा। मैंने एडमिट कर लिया, एडमिट नहीं किया। वहाँ से मेरे को वापस घर पे आना पड़ा। हाँ, घर पे आने के बाद फिर ज़्यादा दर्द होने लगा मिसेस को, तो मेरे को ना एम्बुलेंस की सुविधा मिली, मेरे को थैलागाड़ी में धक्का के ले जाना पड़ा। वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर चेतना चारिल और गायत्री पाटेदार दोनों को निलंबित किया गया है। संबंधित ड्यूटी डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयुक्त स्वास्थ्य को प्रस्ताव भेजा गया है और जो संबंधित बीएमओ है उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और पूरी जांच होने तक उनको बीएमओ के प्रभार से मुक्त करते हुए कार्यालय में अटैच किया। मेरी मिसेस को चेकअप कराने के लिए ले गया था हॉस्पिटल। वहाँ पर मैडम ने चेक किया, मैंने ऐसी समस्या है सिस्टर को, मेरी वाइफ को, अब इसको एडमिट कर लीजिए। सिस्टर ने चेक किया, जब मेरे बच्चे के पेट में धड़कन थी, वहाँ से एडमिट नहीं किया, वहाँ से। हाई कोर्ट के बार का जो ये डेलीगेशन था, इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी में मैं शामिल था और हमने आम जनता में से भी 2 अधिवक्ता चुने थे। स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर चेतना चारिल और गायत्री पाटेदार दोनों को निलंबित किया गया है। संबंधित Allahabad High Court Bar Association on Friday late night decided to boycott Justice Verma's oath ceremony in Prayagraj. The government on Friday notified the transfer of Delhi High Court Judge Yashwant Verma to his parent, Allahabad High Court. The order coming amid a row over alleged discovery of a huge amount of cash from his official residence. The Law Ministry issued a notification announcement his transfer. हाई कोर्ट के बार का जो ये डेलीगेशन था, इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी में मैं शामिल था और हमने आम जनता में से भी 2 अधिवक्ता चुने थे। तो ये एक बड़ा इफेक्टिव डेलीगेशन था। मंत्रालय में
हम लोग को टाइम मिला, वहाँ पे मुलाकात हुई, वहाँ सारा हम लोगों ने बताया, मंत्री जी से बात हुई, सब कुछ दिया। फिर सीजीआई साहब के यहाँ अगले दिन हम लोग गए, वहाँ भी मुलाकात हुई, वहाँ भी हमारा पूरा प्रोटेस्ट दर्ज हुआ, रिकॉर्ड पे आया। लेकिन आज जो हुआ आपको सब पता है। यशवंत वर्मा जी वापस इलाहाबाद में हैं, कल उनकी सुबह ओथ होने वाली है। तो आज ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग, इमरजेंट मीटिंग बुलाई गई थी। इस अर्जेंट मीटिंग में हमने कुछ फैसले किए हैं। जैसे पहला फैसला तो हमने ये किया है कि आज का दिन ये ब्लैकेस्ट डे इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम कहा जाएगा। और आज का दिन नहीं है, 28 तारीख का दिन, और 28 तारीख को जो कल का दिन था वो ब्लैकेस्ट डे इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। दूसरा ये कि हमारी लड़ाई जो थी जुडिशरी को बचाने की थी, बचाने की है। कॉमन लिटिगेंट को कोई तकलीफ ना हो, इस बात। In a major anti-Maoist operation in Chhattisgarh Sukma district on Saturday, at least 16 Naxalites were killed and 2 security personnel sustained injuries. The gunfight broke out at around 8 a.m. in the forest under the Kerlapal police station area, where a joint team of security personnel was out on an anti-Naxalite operation. Firearms including an AK-47 rifle, self-loading rifle were recovered from the spot. According to the information, around 20 to 25 Naxalites were present, and personnel from the DRG and the Central Reserve Police Force were involved in the operation based on the input about the presence of Maoists in the Kerlapal area. 132 Naxalites have been gunned down in separate encounters in the state. उनके बीच मुठभेड़ जारी है और इसमें अभी तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। AK-47 SLR इंसास जैसे ऑटोमेटिक वेपन इस मुठभेड़ में बरामद किए गए हैं और नक्सलियों की शिनाख्ती जारी है। जवान घायल है, उनको मतलब आगे। In Sukma, Chhattisgarh, Union Home Minister Amit Shah praised security forces on Saturday after they killed 16 Naxalites and seized a large cache of weapons in a major operation in Sukma. Shah stated on Twitter that the operation was another significant strike against Naxalism. He reiterated the government's commitment to eradicating Naxalism by March 31, 2026 under Prime Minister Narendra Modi's leadership. Shah's appeal to those carrying arms, stating that only peace and development can bring change, not violence. 2 security personnel were also injured during the operation. The husband of a 32-year-old woman whose body was found stuffed in a suitcase in Bengaluru has emerged as the main suspect in the case and was now undergoing treatment in Pune, in Maharashtra, after a legally suicide attempt on Friday. The body of Gauri Kedirkar, a native of Maharashtra, was found on Thursday with several injuries marked and packed inside a suitcase. However, a police official in western Maharashtra's Satara district, where Rakesh Kedirkar was found, said the man told them he had killed his wife. Addressing a press conference, Bengaluru City Police Commissioner said the police have registered a case in this regard and it seems the woman's husband is the main suspect. क्या हुआ था एग्जैक्टली? आपको कब फोन आया? और मेरे लड़के का फ़ोन आया ना, मेरे लड़के का फ़ोन आया कि मैंने ऐसा किया है। वो बहुत झगड़ा कर रहे थे मेरे साथ। 4 दिन पहले उसकी लड़की की माँ को भी उसने फ़ोन किया था कि मेरे को बहुत तकलीफ़ दे रही है करके। तो उसकी माँ ने भी उसको समझाया, क्योंकि उसकी माँ जो है लड़की की, वो मेरी सगी बहन है और वो लड़की जो है मेरी सगी भांजी है। और वो इधर जोगेश्वरी में भी उसने बहुत तकलीफ दिया। मेरी माँ बूटी है, 86 उम्र की है। उसने भी उधर पुलिस स्टेशन में भी बहुत कंप्लीट हो गई है। तो ये राकेश ने आपको कब कॉल किया? राकेश ने मेरे को दोपहर को कॉल किया। दोपहर को? हाँ, रात को 12 बजे निकला बोला, लेकिन वो उसने झेर का बाटली लिया हुआ था। तो मैं को बोला कि मेरे को सबको बोल दो, उसकी माँ को बोल दो, सब लोग को बोल दो कि मैंने ऐसे किया हूँ करके, कि तुम उधर बेंगलोर में ये करो, बोल दो कि उसने पता सब भेज दिया उसने। तो क्या उसने आपको बताया था कि उसने ऐसा कुछ किया है उसके पत्नी के साथ? नहीं, पहले नहीं बताया उसने। रात को दूसरे दिन जो फोन आया तभी मेरे को बताया कि मैंने ऐसा किया हूँ और मैं भी सुसाइड करने वाला हूँ, मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। क्या हुआ था एग्जैक्टली? आपको कब फोन आया? और मेरे लड़के का फ़ोन आया ना, मेरे लड़के का फ़ोन आया कि मैंने ऐसा किया है। वो बहुत झगड़ा कर रहे थे मेरे साथ।
4 दिन पहले उसकी लड़की की माँ को भी उसने फ़ोन किया था कि मेरे को बहुत तकलीफ़ दे रही है करके। तो उसकी माँ ने भी उसको समझाया, क्योंकि उसकी माँ जो है लड़की की, वो मेरी सगी बहन है और वो लड़की जो है मेरी सगी भंजी है। और वो इधर जोगेश्वरी में भी उसने बहुत तकलीफ दिया। मेरी माँ बूटी है, 86 उम्र की है। उसने भी उधर पुलिस स्टेशन में भी बहुत कंप्लेंट हो गई है। तो ये राकेश ने आपको कब कॉल किया? राकेश ने मेरे को दोपहर को कॉल किया। दोपहर को? हाँ, रात को 12 बजे निकला बोला, लेकिन वो उसने झेल का बाटली लिया। In North Delhi, Alipur area, a history shatter was shot dead on Friday evening. Preliminary investigation revealed that the victim was identified as Karan Thapa and he had a criminal background with 2 cases registered against him for attempt to murder and extortion. Police suspect personal enmity as a possible motive behind the killing, as he was reportedly involved in a long-standing family dispute with his in-laws. A case has been registered and multiple teams have been formed to track down the assailants. CCTV footage from the area is also being scanned to nab the accused. A decomposed body of a woman was found in a bed box wrapped in a blanket in a flat in Delhi's Shahdar on Friday. Police said that the owner of the house, identified as Vivekananda Mishra, aged between 55 to 60 years, has been apprehended and is being questioned. Police also said that identity of the woman, aged between 35 to 40 years, is yet to be ascertained. ये 118 सत्यम एनक्लेव है झिलमिल कॉलोनी में, डीडीए फ्लैट्स, विवेक विहार। घर लॉक था। घर के अंदर एक लाश मिली है, एक बैग में लिपटी हुई, जिसके ऊपर ब्लैंकेट था। ये बेड बॉक्स में थी और घर का ओनर है विवेकानंद मिश्रा। ये 55-60 साल के बुजुर्ग है। लेडी अनआइडेंटिफाइड बॉडी है अभी, और ये कुछ 35-40 साल की लग रही है, मैरिड लग रही है, बिकॉज हाथों में लाल चूड़ है। ये 118 सत्यम एनक्लेव है झिलमिल कॉलोनी में, डीडीए फ्लैट्स, विवेक विहार। घर लॉक था। घर के अंदर एक लाश मिली है, एक बैग में लिपटी हुई, जिसके ऊपर ब्लैंकेट था। ये बेड बॉक्स में थी और घर का ओनर है विवेकानंद मिश्रा। ये 55-60 साल के बुजुर्ग है। At the Indian Grand Prix 1, Gurindravir Singh set a new men's 100m national record with a time of 10.20 seconds, breaking the previous record of 10.23 seconds set by Manikanta in October 2023. Singh, representing Reliance, surpassed his own personal best of 10.27 seconds. Hoblinder, who finished second, clocked 10.22 seconds, also improving his previous record. Reliance athletes swept the top 3 spots, with Amlan finishing third in 10.43 seconds. In the women's 100m, Telangana's Nitya Gandhi emerged victorious with time of 11.41 seconds, while later beating national record holder Jyoti in the 200m with a time of 23.36 seconds. Niti Aayog Program Director Pravakar Saho said on Friday that the US plan to improve reciprocal traffics will not have much impact on India and create several opportunities for the country. He added that compared to Mexico, China and Canada, which account for 50% of America's total imports, India is favorably placed. He also said that detailed analysis of the reciprocal tariff plan's impact on India will be represented in the next edition of the report. We are looking at the data at a very disaggregate level, 2-digit, 4-digit and 6-digit. This is what we find. These are preliminary results, but I can just give you the overview that we are not going to lose. This reciprocal tariff is not going to affect except very specific sectors. In fact, there are opportunities to really capture. Let me give you an example. Like top 10 chapters or products at a 2-digit category, it's something like 85-90% of the total exports to the US. What we find is just 44% of the total exports at 2-digit level. The difference is only 2%, which can be negotiated, so it's not going to get affected. So around 50% where we find
5 to 30% difference, particularly 5 to 10% difference is something like 35 to 40% of our exports. Now, this is the bilateral thing if the reciprocal tariff structure has been imposed, suppose. Now, look at the competitors. Who are the competitors in the US market for most of the products? It's Canada, it's Mexico, and it's China. And these three countries actually export 50% of the total imports of the US. Total imports of US is 3,100 some billion, 3.1 trillion. Out of that, 50% comes from these three countries and they are competitors. Now, they are going to face 25% tariff rates in case of Canada, in case of Mexico, and also too much later. yeah, and then 20% on China already. So if we compare our position given the tariff difference and then the post-imposition tariffs on these competitors, those who are competing with us in the US market, we are much, much better off the post scenario. This is about this quarter 2 report that we are going to release, but we are planning to bring out a kind of very specific focused analysis about President Trump's tariffs or proposed tariffs. What is going to happen, we don't know, so we have not covered that part in this edition. We are going to have a special section on what we call US's trade policy and its implications on India's trade and everything in the forthcoming session. So there are a number of research papers which show that China's share of US imports has declined, and that of 5 countries, and different studies show different people on top and in the middle, but I'll just name them in no particular order. The 5 countries which have seen an increase in the share of US imports corresponding to China's share decline are Taiwan, Vietnam, Mexico, Thailand, and India. To target or look at BTAs, FTAs with those with countries with large share of world manufactured exports, which are the source of a large proportion of FDI, and which are the sources, headquarters of MNCs, which can act as lead anchors. The lead anchor issue has also been mentioned. Now, it turns out these go together, and the top countries in this context are, or countries or economies, are USA. That is all for the Nltv English Prime Time. For more news and updates, keep watching Naglin TV.